Hello everyone, welcome to ERWIN ChemScience. Chemical kinetics first lecture. Physical chemistry रे chemical kinetics one of the most important topic and exam point of view ये topic रे weightage बहुत बेसी अछि because ये topic एका ही नहीं. With this topic in a row there are three topics in direct relation: surface chemistry, photochemistry and nuclear chemistry. Chemical kinetics topic रे study ର approach, mathematical derivation, logic and concept ताल्लुक रखें surface chemistry, photochemistry and with nuclear chemistry. In chemical kinetics topic we study or we calculate rate of a reaction calculation, order of a reaction calculation, concentration versus time and time versus concentration calculation, different lifetime calculation like T50%, T75%, T99.9%, T100% or any lifetime can be calculated there, not a problem. Factors affecting rate of reaction and finally theories in chemical kinetics. We study there Arrhenius theory, that is all about effect of temperature over rate of reaction and over rate constant. Landman unimolecular reaction, its mechanism, concept and logic. Collision theory of bimolecular reaction, its assumption and conclusion. Enzyme kinetics, that is our Michaelis-Menten equation concept. And finally activated complex theory, that is our Eyring and Polanyi equation concept. तो ये जो brief syllabus रहिला chemical kinetics रो इठी जो प्रकार mathematical derivation अछि, logic and concept interconnected to the mathematical derivation, logic and concept of surface chemistry, photochemistry and nuclear chemistry. Coming to surface chemistry, there we study adsorption, desorption, factors affecting adsorption, rate of adsorption, rate of desorption, lifetime calculations, thermodynamics of adsorption, theories of adsorption like Langmuir adsorption theory, Gibbs adsorption theory, Friendlich adsorption theory, Temkin adsorption theory, Bernard Emlet Taylor adsorption theory and many things are there. So ये जो syllabus रहिला surface chemistry रो इथरे जो प्रकार mathematical derivation, logic and concept अछि interconnected to the mathematical derivation, logic and concept of chemical kinetics. Going to photochemistry, सेठी हमें कौन स्टडी करंती rate of fluorescence, rate of phosphorescence, quantum yield, kinetic chain length calculation, Jablonski diagram, absorbance, transmittance and many things are there. So ये जो topic रो syllabus रहिला इठी जो प्रकार mathematics, logic and concept अछि also many things interconnected to chemical kinetics. Going to nuclear chemistry, there we study rate of decay of a radioactive nuclei, concentration of a radioactive nuclei at a given time t, decay constant calculation, carbon dating, nuclear fission, nuclear fusion and many things are there. Also this topic interconnected to the concept of and mathematics of chemical kinetics. सेथिପାଇଁ कुहा जाय ए चारोटी टॉपिक गोटे क्लब रो, सो दैट chemical kinetics टॉपिक को बहुत भल भाबरे अंडरस्टैंड करले, प्रत्येक लॉजिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स को भल से अंडरस्टैंड करले, ताको गोटे कंफर्ट जोन रे रखिले यार फायदा मिलिबो सरफेस केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री टॉपिक को पढ़ला बेले. ये तीनोटी टॉपिक को पढ़ला बेले हमको एवरीथिंग न्यू लागिबो कि मेनी थिंग्स वी हैव समहाउ स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक्स इजी बनी जीवो, सो दैट कि एग्जाम रे कॉन्फिडेंटली हमें चारिटा टॉपिक को लेके जाई परिबो. एग्जाम एंगल रे देखिले सपोज ए +2 पिलांक एग्जाम देखिले IIT JEE और नीट एग्जाम, BSc पिलांक एग्जाम फॉर MS एंट्रेंस एग्जाम IIT JAM, CUCET-PG CPET एग्जाम फॉर MS स्टूडेंट्स CSIR-NET गेट एग्जाम हो और फॉर डिफरेंट लेक्चरशिप एग्जाम SSP ओडिशा PGT वगैरह एग्जाम हो. ये चारिटा टॉपिक रो ढेर सारा क्वेश्चन आसे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिबा ए टॉपिक रो सिलेबस कोन अछि, सो दैट कि वी विल हैव ए ब्रीफ आइडिया ओवर दिस टॉपिक कि कौन कौन पढ़िबा को अछि एंड को पार्ट रो केमती कोन क्वेश्चन आसे. एंड फाइनली टुडे लेक्चर रो मेन इंपोर्टेंट पोर्शन को जीवा कि भाई ये रेट ऑफ रिएक्शन रो कांसेप्ट कोन, ये कोट ओरिजिनेट हिच, देन टाइम टू टाइम हमें एवरेज रेट कैलकुलेशन, इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, गुलबर्ज एंड वेजेस लॉ को पढ़े जीवा. ये गोटे कंप्लीट पैकेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज द सिलेबस इन केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक को हमें ब्रॉडली 3 पार्ट रे डिवाइड करि परिबा. वन पार्ट इज बेसिक केमिकल काइनेटिक्स, दैट मींस elementary chemical kinetics. Second part is kinetics of complex reaction,
and third part is theories in chemical kinetics. Under basic chemical kinetics or elementary chemical kinetics, we have extent of a reaction, rate of conversion, rate of a reaction, then average and instantaneous rate, there is stoichiometry, Goulburt's and Wedge's law, that is law of mass action, order and molecularity, empirical rate laws of zero order reaction, first order reaction, second order, third order and nth order reaction. And we calculate here order of a reaction. There are different methods: integration method, Van 't Hoff method, Ostwald isolation method, half-life method and differential method. 5 methods are there, but practically हमें मोस्टली यूज करते डिफरेंशियल मेथड एंड हाफ लाइफ टाइम मेथड को. इंटीग्रेशन मेथड एते फ्रिक्वेंट यूज हुए नहीं. ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड और वैन 't Hoff मेथड भी एते हमें यूज करते नहीं. एंड गोइंग टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. यार अंडर रे अच्छी रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट मीन्स कि दोज रिएक्शन व्हिच कैन बी अचीव्ड from both the end of reaction, that means from the reactant side and from the product side, equilibrium is established there. हमें एटी कैलकुलेट करते कौन डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड मोस्टली रिलैक्सेशन टाइम ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. ये एग्जाम रे अक्सर आसे. देन गोइंग टू काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन और concurrent reaction. Kinetics of parallel reaction and concurrent reaction. When a reactant following more than one mechanism path or reaction path give rise more than one product in a different amount or in same amount, that is what? A parallel reaction or a concurrent reaction. Suppose a parallel reaction is represented here. Reactant A following two different mechanism path giving two different product B and C. इठी हमें कैलकुलेट करते कौन concentration of A at a time t, reactant concentration, product B रो concentration at a time t, product C रो concentration at a time t, ratio of different product concentration and finally percentage of different product concentration. Third is consecutive or sequential reaction. Consecutive or sequential reaction are those reaction where one reactant give a product, that product again behave as a reactant for the next step, it give another product, and that product again behave as a reactant for the next step, and this process continue. कहबाकू गले these are the radioactive disintegration reaction. A mother particle give a daughter particle, then that daughter particle again behave as a mother particle and give rise to another daughter particle, and that process continue. A smallest unit of consecutive reaction is represented A going to B, B going to C. Reactant A दूची product B and एबे product B behave करछि reactant भली C product को दबा पाई. एमती प्रोसेस चालू रहिबो. गोटे स्मॉलेस्ट यूनिट को कंसीडर करिछि. एठी हमें कैलकुलेट करंती कोन concentration of A at a time t, concentration of B at a time t and concentration of C at a time t. See here B is like a intermediate here. B A रो फॉर्म होछि पुणी बी डिफॉर्म होछि सी को. यार मतलब कि जेतले बीटा इंटरमीडिएट भली बिहेव करूछि तले एमिति गोटे टाइम थिबो जेतले बी रो कंसंट्रेशन मैक्सिमम हेतिबो कि भाई देखो ए रु बी फॉर्म हैला अगेन बी एबे सी को डिफॉर्म हे जिवो तो फाइनली बी तो कंज्यूम हे जिवो बट एमिति गोटे टाइम थिबो जो टाइम रे बी रो कंसंट्रेशन मैक्सिमम लिमिट रे पहुंचतिबो सेटा को जे बी मैक्स एंड कॉरेस्पोंडिंग टाइम को जे टी मैक्स. इठी हमें दुईटा केस रे ग्राफ प्लॉट करंती K1 इज ग्रेटर देन K2 एंड K2 ग्रेटर देन K1. जो केस रे K2 वेरी वेरी ग्रेटर देन K1 हुए से केस रे गोटे कांसेप्ट आसे अप्रोक्सीमेशन मेथड. ता अंडर रे दुईटा मेथड आसे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एंड इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन. आ बाय गॉड ये जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ना बहुत जगह यूज हुए. थ्योरी ऑफ काइनेटिक्स रे यूज हुए, फोटोकेमिस्ट्री यूज हुए. Most of the cases रे जोठी rate of reaction is dependent over the concentration of intermediate or over a short living species. सेठी हमें steady state approximation और equilibrium approximation यूज करके short living species रो concentration को long living species रो concentration रे और indirectly saying intermediate रो concentration को reactant concentration में convert कराते.
ओके ताको आम देखा ताको एलाबोरेटली स्टडी करवा गोइंग टू थर्ड पार्ट ऑफ syllabus that is theories of kinetics एठी हमर रहइबो Arrhenius theory of temperature dependence over rate of reaction that is all about effect of temperature over rate of reaction and over rate constant. Arrhenius theory is supported by Woodcraft concept and finally Arrhenius equation is modified by Gardner that is what Gardner modification. Going to Lindemann unimolecular reaction ये तार mechanism दिया जाइछि there is a collision between same type of reactant A and A. They move through a reversible path giving A star, that means a more energetically reacting molecules now A star plus a lower energetically reacting molecule A, and finally A star is decomposed to product. Collision theory of bimolecular reaction, Michaelis-Menten theory, that means enzyme kinetics. ये होची enzyme kinetics रे mechanism free enzyme plus substrate giving enzyme substrate complex गोटे reversible path follow करके enzyme substrate complex दियंती, and finally enzyme substrate complex is decomposed to product and free enzyme. Eyring-Polanyi equation, this is activated complex theory. There is the collision between two reactants following a reversible path. They give a activated complex ABH and finally ABH is decomposed to product. In short, this is the things, but elaborately हमें बहुत ढंग से इनको study करेगा. So this is all about the brief syllabus of chemical kinetics. So truly saying, first part of chemical kinetics रे important ये different MS entrance exam पाई मोर जो तजुर्बा अच्छी experience generally IIT JAM, CUCET-PG और CPET वगैरह exam रे first part of syllabus रो बहुत ही question आसे. CSIR-NET exam रे section B रो question almost first part रो syllabus and section C रो question almost theory of kinetics and kinetics of complex reaction part रो आसे. तो खैर ये तो syllabus हमें overlook करने ले then हमें जीवा chemical kinetics रो first step को concept of rate of reaction ये concept कोट आसलो. देखो rate मतलब कि किछि भी गोटे घटुची ता पई से केते समय नउछ. सपोज हमें कहबे कि ये पिला को रेट रे काम कला, सपोज दुई जण पिला काम करूचंती, को पिलाटे भलो काम करूचे जणा पड़े रेट रो केते काम कला ता रेस्पेक्ट से केते टाइम नेला दैट इज रेट. कोनी छोटे कार मूव करूची, ओके सेई कार को रेट रे मूव करूची दैट मींस से केते डिस्टेंस कवर करूची केते टाइम नै कि जोटा हमें स्पीड कैलकुलेट करूचंती एक नै. सो केमिकल काइनेटिक्स दैट मींस रिएक्शन इन मोशन. If a reaction in motion, we are calculating what? Concentration and time. Reaction suppose C moles per liter of reactant to start hela 10 मिनिट परे एबे reactant रो concentration केते हितिबो and product रो concentration केते हितिबो नहीं तो suppose reactant रो concentration initially C moles per liter थिला एबे C1 moles per liter ही सरछि केते टाइम नैतिबो. Just like car is moving, we calculate distance and time. Exactly same thing here in chemical kinetics. ओके सो जमते हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करंती गोटे जो कार मूव करे से केते डिस्टेंस कहिना कार स्पीड तो कांस्टेंट नथिबो नहीं से सिचुएशन अकॉर्डिंग केबे 40 किलोमीटर पर आवर केबे 60 किलोमीटर पर आवर. तो फाइनली किछ गोटे डिस्टेंस कवर करथिबो टोटल डिस्टेंस केते कवर कला केते टाइम नेला सेटा कोनटा एवरेज स्पीड. सेमति गोटे केमिकल रिएक्शन रे स्पीड एक्जेक्टली फास्ट टू लास्ट पर्यंत सेम न थाए. इनिशियली बहुत फास्ट थाए and finally से टिके स्लो हे का चले. तो हम सेठी एवरेज रेट को कैलकुलेट करनते. दैट मींस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू केते से टाइम नेला एक ने. आ इंस्टेंटेनियस रेट मतलब कि कोन से पर्टिकुलर टाइम रे रेट ऑफ रिएक्शन. दैट मींस उटे पर्टिकुलर टाइम रे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू दैट टाइम और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दैट टाइम. जेमते में कोन से पर्टिकुलर टाइम रे उटे कार रो स्पीड को चेक करचंती कि भाई पर्टिकुलर टाइम रे कार रो स्पीड केते अछि पर सेटा एवरेज स्पीड न एक नै. तो देखबे कि ए कांसेप्ट कोट आछे केमति ओरिजिनेट होइछ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन अजम्पशन कि भाई रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट इन ए क्लोज कंटेनर. केमिकल काइनेटिक्स तमाम कांसेप्ट लॉजिक एंड मैथमेटिक्स सेतोल एप्लीकेबल जदि रिएक्शन क्लोज कंटेनर होउची सो दैट कि कोनोसी भी फॉर्म रे रिएक्टेंट किमा प्रोडक्ट रिएक्शन चैम्बर रो एस्केप हे कि न जाय परंतु. दैट मींस कि ट्रूली सेइंग law of conservation of mass should be followed there. Reaction must not be very fast. Reaction जदि बहुत फास्ट हे जिवो then chemical kinetics और mathematics logic वगैरह को अप्लाई कर लेन
calculation error ଆସିବ very fast reaction ପାଇଁ chemical kinetics or mathematics not applicable like very fast reaction suppose ionic reaction between NaCl and AgNO3 give rising AgCl and NaNO3 very fast reaction माने microsecond रे finish ହେଇଯିବ so ए केस रे apply हबनी again not applicable to very slow reaction suppose rusting of iron वगैरह और any other slow reaction नहीं जाओ सेठी भी ए mathematics logic apply हबनी error आसीबो calculation में so this is the main assumption here reaction must not be carried out in a closed container reaction must be very fast and reaction must not be very slow this is the first assumption here going to the first foundation of concept of rate of reaction that is originated from extent of reaction and this concept was given by Dunder scientist देथला extent of reaction no concept first of all मु understand करेनी कोन तापरे गोटे एग्जांपल नेला बुझियो एठे हम बुझिबा extent of reaction and stoichiometry तो extent of a reaction is amount of reactant decomposed in mole or amount of product formed in mole during the course of reaction is called extent of reaction and extent of reaction with respect to all participating species in a reaction that means extent of reaction with respect to all reactant and all product at a given time of t will be same so this is the concept of extent of reaction amount of reactant decomposed or the amount of product formed during the course of a reaction is called extent of reaction represented by J and J is equal to n minus n naught upon frequency factor where n is equal to number of mole at a time t n naught is equal to initial mole and the denominator here the things is frequency number ମୁଁ ବତେଇବି ଏବେ ଗୋଟେ एग्जांपल देखि से frequency number कोन this is written n is equal to moles at any time t n naught is equal to initial mole and that thing is your frequency factor coming to stoichiometry the number of times a reactant or a product that is appearing in a reaction is called frequency number or stoichiometry गोटे reaction रे गोटे reactant केते टाइम appear करूची सी होची तार frequency number और frequency factor and गोटे product केते टाइम appear करूची ये तार frequency factor तो stoichiometry number हमें गोटे balance chemical reaction रे जो numerical reactant और product side था सेटा stoichiometry ना but that is should be the frequency factor in chemical kinetics ताको frequency factor in कोई दरकार to find stoichiometry number reaction must be balanced stoichiometry number may be natural numbers or fraction किछि भी पड़े but आको हमें गोटे एग्जांपल नले ये बहुत भलो भाबरे अंडरस्टैंड हो coming to the this is the thing here okay coming to a example let us take a example N2 plus 3H2 going to 2NH3 so these are here is 1 3 and 2 these are the frequency number that means in the reaction chamber if N2 is repeated a single time H2 is repeated 3 times then NH3 will be repeated 2 times तारे आपको क्या frequency मतलब बारंबारता कि भाई गोटे reaction ने यदि N2 थोड़े मुँह देखाए H2 तीन थोड़ा मुँह देखाए then NH3 दो थोड़ा मुँह देखेबो केते टाइम में से appear करिवो ठीक अछि but ये जो frequency number और frequency factor reactant पाई time to time कमी के जीवो product पाई ये बढ़ी के जीवो in that sense कि भाई देखो reaction तो complete हुआ पाई अछि कौन से भी reaction तो 100% complete नहीं ये reaction type को reaction type ऊपर depend करिवो को type रो reaction अछि so the thing is that कौन से भी reaction 100% completed नहीं तो reactant तो finally decompose होची product को तो reactant रो amount तो आस्ते आस्ते कमी जीवो product रो amount आस्ते आस्ते बढ़ी के जीवो that means कौन ये reactant रो frequency आस्ते आस्ते कमी जीवो and product रो frequency आस्ते आस्ते बढ़ी के जीवो so reactant पाई frequency number respect हमें negative use करिबा and product पाई frequency factor respect पाई हमें positive use करिबा देखिबा अब केमिति होबो तो first of all 1 3 and 2 are frequency number here and here we calculate now extent of reaction with respect to all reactant and product let at t is equal to
T0, initial time this is 10 mole, this is 20 mole, and this is 0 mole. Okay. Let at a time T is equal to T1, 5 mole of NH3 is formed. Now the question is calculate extent of reaction with respect to all participating species. तो apply mole concept. जदि N2 रो 1 mole decompose हुए NH3 रो 2 mole form होबो. जदि ଏବେ NH3 5 mole form ହେଇଛି ताले एठी N2 रो 2.5 mole decompose ହେଇଥିବ काहे ना एठू जति के decompose करे तो 2 time appear करिवो. So at a time T1 from 10 mole 2.5 mole will decomposed. N2 रे जति के मोल डिकम्पोज करिवो तार 3 टाइम्स S2 पाइन डिकम्पोज होबो तले 20 मोल लो मु माइनस करबी 3 into 2.5 so will be here 7.5 mole, here will be 12.5 mole, and here will be 5 mole is formed. So this is the final number of moles with respect to all reactant product. Now calculate extent of reaction. But the thing is what? Extent of reaction with respect to all reactant and all product should be same. आपको हम बताई चंदे. आपको mathematical show कर करेंगे. Going to extent of reaction. Xi of N2. So that will be is equal to N minus N naught upon frequency factor. And for reactant, there will be a negative sign for the frequency factor because frequency of reactant appearing frequency मतलब कौन number of times the reactant will appear in the reaction chamber. तो आहिस्ता आहिस्ता तो reactant decompose होगा पाएं अच्छी, finish होगा पाएं अच्छी, reduce होगा पाएं अच्छी, so that we will use a negative sign. N naught is amount at a time. This is 7.5 mole. Initial is 10 mole upon a 1 minus 1. So minus 2.5 upon minus 1. This is 2.5. Okay. Xi of H2. So this is N minus N naught upon again frequency factor. This is 12.5 minus 20 upon a minus 3. That is now minus 7.5 upon minus 3. That is 2.5. Xi of NH3. N minus N naught upon frequency factor. Mole at a time T is 5, initial 0 upon 2 plus 2, this is 2.5. Yes, now extent of reaction with respect to all reactant and product remains same. But one problem is here, Donder took all calculation in mole. But practically we are not much more interested to make all calculation in mole because हमको तो reaction करीबा कुछ liquid state रे, and in liquid state all measurement in concentration term कि भाई कितने मोलर तो reactant नहीं चु, कितने normal और नहीं चु, कितने strength percentage हिसाब रे नहीं चु, कितने percentage by volume रे नहीं चु, etc etc. That means I need a concentration term. एक नहीं. And one thing is there is no involvement of time. यदि time ही involvement नहीं then rate calculation केमिति हो हमर तो मेन मकसद है कि भाई मु रिएक्टेंट को मार्केट रो खरीद करके आनिले रिएक्शन चालू रखिले एंड मते प्रोडक्ट को कोठी कोनसे कंज्यूमर को देवा पई अछि जदि रिएक्शन को रेट रे चालू छ मु जानि परिबिनी तले केते टाइम परे केते प्रोडक्ट आसीबो मु केमिति कैलकुलेट करिवि एक नै जदि गाड़ी रो स्पीड मु जानि परुनी केते स्पीड रे जाउची देन 30 मिनिट्स पर से गाड़ी कोठी पहुंच मु केमि जानि परिबि एग्जैक्टली सेम थिंग तो रिएक्शन जदि हम स्टार्ट कर देले 30 मिनट पर 40 मिनट पर जदि हम रिएक्शन रेट कैलकुलेट करि पर नांती तले हम केमि जानिबा कि 30 और 40 मिनट पर रिएक्शन रो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कोन हेतिबो प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन कोन हेतिबो दैट मींस कोन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम एंड ऑल कैलकुलेशन आर इन मोल नाउ तो एटी प्रॉब्लम फसिक रहला ये प्रॉब्लम आस्ते आस्ते एलिमिनेट हो तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन गिवन बाय डोंडर इज नाउ गोइंग टू rate of conversion rate of conversion that is ROC कौन क्वेश्चन ना बुझुछ ना ओके इट इज ओके एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम बट प्रॉब्लम कौन हला कि भाई कैलकुलेशन इन मोल ये तो प्रॉब्लम हला हमको तो लिक्विड स्टेट रिएक्शन करबा कुछ काहे कि
कहीं सॉलिड स्टेट रिएक्शन वेरी स्लो किसी फायदा हेनी गैसियस स्टेट रिएक्शन बहुत ही फास्ट बिकज रेट ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम बहुत ही फास्ट हम कॉलिजन रु एनर्जी आसो दैट विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्टिंग मॉलिक्यूल रीच एट थ्रेशोल्ड एनर्जी वेट तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो सॉलिड स्टेट सब दुईटा रिएक्टेंट अच्छे से माने जितकी सरफेस एरिया कंटाक्ट करेंगे से जितकी एक्टिवेशन एनर्जी आसो से पार्ट केवल रिएक्शन चलो तो इनडायरेक्टली से सॉलिड स्टेट भी रिएक्शन बहुत ही स्लो गैसियस स्टेट रिएक्शन बहुत ही फास्ट एंड लिक्विड स्टेट आमको रिएक्शन करने को अच्छे एंड लिक्विड स्टेट रिएक्शन करने को हेल्ले एमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को आम तो कनसेंट्रेशन टर्म मेजर करने को अच्छे तो ये प्रोब्लेम फसिक कि भाई ये तो कनसेंट्रेशन टर्म मिलूनी एंड कौन टाइम इनवॉल्वमेंट ना जब टाइम इनवॉल्वमेंट ना तो रेट केमती कैलकुलेट हम कि जेकोसी थिंग घटू तले तो टाइम डिवाइड होगा दरकार रेट कैलकुलेशन तो से रेट ऑफ कन्वर्जन में कन्वर्ट कले रेट ऑफ कन्वर्जन आरओसी इज इक्वल टू फास्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपको हमें एमती लिख पारिबा ना दिस कैन बी रिटन टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज व्हाट रेट ऑफ कन्वर्जन see the time derivative of extent of reaction is called rate of conversion that is ROC is equal to dj upon dt now observe one thing कि भाई xi of n2 was is equal to xi of h2 was is equal to xi of n2 was is equal to xi of h2 that was is equal to xi of nh3 एमाने कन्स्टान्सी मेंटेन करते वी हैव शोन इट जदि एबे मु डी अपन dt प्रत्येक टर्म रे मल्टीप्लाई कर दिए जो न्यू टर्म आसीबो रेट ऑफ कन्वर्जन ये एबे कन्स्टान्सी मेंटेन करिवो ना ताले हम कहि परिबा कोन अरे एबे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम शो करछन 2.5 प्रत्येक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम अछि जदि एबे डी अपन dt प्रत्येक टर्म रे मल्टीप्लाई करे सेम थिंग मु मल्टीप्लाई करली अगेन जो नुवा टर्म आसीबो ताले प्रत्येक रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो सेम हम ताहले जदि डी अपन dt मु मल्टीप्लाई करे प्रत्येक टर्म रे ये कन्स्टान्सी मेंटेन करबा दरकार एंड डी अपन dt विथ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये कौन है गला रेट ऑफ कन्वर्जन सो दिस इज नाउ रेट ऑफ कन्वर्जन विथ रिस्पेक्ट टू n2 that will be is equal to rate of conversion with respect to h2 that will be is equal to rate of conversion with respect to nh3 ऐसी गला रेट ऑफ कन्वर्जन रेट टर्म तो एटलिस्ट पड़ी आसला ना किसी गोटे चेंज होची किसी टाइम को नहीं तो अधा जिनस तो निपटी गलानी बट टिल ना आमको कंसंट्रेशन टर्म मिलेनी एबे कंसंट्रेशन टर्म को आनिबाटा बहुत इजी हम एंड फाइनली आम रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन में पहुंची जीवा रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग ए टाइम एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टेकिंग ए टाइम एक नहीं से एवरेज रेट हो पारे कि इंस्टेंटेनियस रेट हो पारे वन थिंग ऑब्जर्व हियर इफ द रिएक्शन इज नाउ इन ए क्लोज कंटेनर ताले वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गोटे कांस्टेंट वॉल्यूम रे प्रत्येक रिएक्टेंट प्रोडक्ट अच्छे ताले वॉल्यूम टा समस्त कांस्टेंट अच्छे ताले यदि वॉल्यूम को मु एबे प्रत्येक टर्म रे डिवाइड कर देबी जो नुआ टर्म आसीबो ताको मु भी कहबी कोनटा समान हो विथ रिस्पेक्ट टू ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एबे जो रेट ऑफ कन्वर्जन आसी जाई प्रत्येक टर्म पई समान अछि यदि वॉल्यूम को मु डिवाइड कर देबी आ वॉल्यूम टा समस्त पई कांस्टेंट अछि जो नुआ एक्सप्रेशन आसीबो सेटा भी समस्त पई कांस्टेंट हो ओ माय गॉड ब्यूटीफुल थिंग्स पळि आसीबो कि रेट ऑफ रिएक्शन नाउ डिवाइड टिलेट रेट ऑफ कन्वर्जन इज सेम विथ रिस्पेक्ट टू ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गोइंग टू rate of reaction ROR when volume is divided with rate of conversion it is rate of conversion when volume is divided with rate of conversion this is rate of conversion tale volume divide hela rate of conversion nuwa term asbo kon rate of reaction let's divide 1 upon v of rate of conversion is equal to 1 upon v rate of conversion is dxi upon dt that is equal to 1 upon v d xi is n minus n naught upon frequency factor and this is dt here n is mole of reactant or product at a given time t जो रिएक्शन जतले कंटिन्यू चली थिबो रिएक्टेंट रो मोल
कमी कमी चलथिबो प्रोडक्ट मोल बढ़ी बढ़ी चलथिबो तो एन कौन हो वेरिएबल एन नॉट कौन इनिशियल अमाउंट और इनिशियल अमाउंट कौन सी भी रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट पाई कांस्टेंट तो कांस्टेंट और डेरिवेटिव 0 हो जिवो फाइनली वी विल गेट एनटीएच so that will be equal to 1 upon v dn upon dt one thing so that will be equal to frequency number or frequency factor is constant I can make it frequency factor outside dn upon v upon dt minus 1 upon frequency factor d n naught upon volume and this is dt I can make it na distribute करे नेले volume को and a part तो 0 ही 0 because constant or derivative 0 and now number of mole upon volume of container that is now concentration so this is now what 1 upon frequency factor dc upon dt oh my god so this is actually the expression of rate of reaction this is actually now the expression of rate of reaction and ध्यान रहे ये जो frequency factor अच्छी आ संगरे positive किमा negative जोड़ी ही अच्छी reactant पाई you have to use negative and product पाई you have to use positive so this is now what rate of reaction it is the rate of reaction change in concentration of reactant and product with respect to time and reciprocal of what stoichiometry and से stoichiometry पाकरे negative sign रहिबो reactant पाई और positive sign रहिबो product पाई so finally जो reaction हमर अछि N2 plus 3S2 going to 2NH3 तो जदि हम rate of reaction नो expression को लेखन्ति that will be now its stoichiometry is 1 so 1 upon minus 1 d of N2 upon dt that will be now equal to minus 1 upon 3 d s2 upon dt that will be equal to now plus of 1 upon 2 d of ns3 upon dt see the journey प्रथमे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिस्पेक्ट सेम हे गला किंतु प्रॉब्लम रहला कोन कैलकुलेशन इन मोल एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम सेकेंड रे कौन कल कन्वर्ट कले रेट ऑफ कन्वर्जन में ओके तो टाइम इन्वॉल्वमेंट तो होगला बट अगेन वी डिड नॉट गेट कंसंट्रेशन टर्म एंड फाइनली रेट ऑफ कन्वर्जन तो प्रत्येक टर्म पाई सेम थिला आ वॉल्यूम टा प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पाई सेम अछि तले रेट ऑफ कन्वर्जन ने जदि वॉल्यूम को डिवाइड कर दे जो न्यू टर्म आसीबो समस्तन पाई सेम होबो आ सेटा कोन हेगला रेट ऑफ रिएक्शन सो दिस थिंग रिप्रेजेंट व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन यूज हमर रेट ऑफ रिएक्शन this is rate of reaction this is rate of reaction or rate of that reaction this is also rate of that reaction this is rate of reaction with respect to NH3 rate of reaction with respect to N2 and rate of reaction with respect to S2 but a term ru jodi ame only negative sign with respect to change in concentration upon change in time ku nova se term represent karibo kon only rate of deformation of N2 that means only minus dN2 upon dt you have only rate of deformation with respect to N2 that means reciprocal of stoichiometry nebini semti minus ds2 upon dt that will be is equal to rate of deformation with respect to S2 and the same way plus of dNH3 upon dt that will be rate of formation with respect to NH3 and ध्यान रहे मुठी is equal to symbol लगाइन that means rate of deformation of N2 not only is equal to rate of deformation of S2 that will not is equal to rate of formation of NH3 but yes हमें relation बंधे परिवा जदि rate of reaction with respect to N2 is equal to rate of reaction with respect to S2 तले दुई टांग टर्म सेम थिबो is equal to like this सेमति अछि प्रबुरु तले एठी ए जो रेसिप्रोकल अछि 1/1 एठी आगुड़ केते अछि एठी आगुड़ केते अछि if I make rate of reaction this is minus 1/3 तो यार किछ स्टोइचियोमेट्री नै जदी आकु म लिखतनी minus dN2 upon dt तलार
जो स्टोइचोमेट्री रेसिप्रोकल होइके अछि 1/1 ये डिनोमिनेटर जाके मल्टीप्लाई होता फॉर्चुनेटली 1 अछि तो किसी प्रॉब्लम नहीं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू S2 अगेन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ N2 that is equal to 1/3 times of rate of deformation of what S2 ठीक अछि समथिंग again we can make it we have rate of reaction with respect to N2 is equal to rate of reaction with respect to what NH3 तो फॉर्चुनेटली एठी किछि कोनटा डिनोमिनेटर 1 अछि तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू N2 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स रेट ऑफ फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू NH3 ये सेम ही जाउछ किछि प्रॉब्लम नाही एठी कहना स्टोइचोमेट्री 1 अछि बट ए दुइटा टर्म को बेसी अंडरस्टैंड हो कमिंग टू दिस कोनटा रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू S2 एंड रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NH3 we have minus 1/3 d of S2 upon dt is equal to minus plus 1/2 d of NH3 upon dt. So if I only say what is how many times rate of deformation of S2 with respect to rate of formation of NH3. So this part is only rate of deformation of S2. So minus dS2 upon dt will be is equal to 3/2 dNH3 upon dt. That is we can say rate of deformation of S2 is equal to 3/2 times of rate of formation of NH3. पूर्व केस रे एटी किछि डिनोमिनेटर रे नंबर नथला ओनली 1 था तो किछि फरक जଣା पड़ नथला सेठी एठी हम कहबा कोन rate of deformation of N2 is equal to 1/3 times of rate of deformation of S2 एठी हम कोन कहबा rate of deformation of N2 is equal to 1/2 times of rate of deformation of NH3 एठी rate of deformation of S2 is equal to 3/2 times of rate of formation of NH3 रिवर्स भी तुमे कहि परिबो रिवर्स भी कहि परिबो सपोज हम कहबी कि rate of formation of NH3 is how many times rate of deformation of N2 so that will come from this expression अच्छी कौन plus रे 1/3 d of NH3 upon dt is equal to minus 1/1 of d of N2 upon dt. Okay, if I say only rate of formation of NH3 is how many times rate of deformation of N2, this part is only rate of formation of NH3, not rate of reaction but rate of formation of NH3. So dNH3 upon dt will be is equal to minus 3/1 d N2 upon dt. So we can say rate of formation of NH3 is equal to minus 3 times of rate of deformation of N2. Clear ये तो ये टाइप रो क्वेश्चन भी आसे तो नेक्स्ट क्लास टाइम देखिबा एवरेज रेट कैलकुलेशन इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेशन गुलबर्ग एंड वेजेस लॉ एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन. थैंक यू एवरीवन.